I'm going to get so much hate for this, but I've been seeing a lot of posts on Reddit about women ranting about their lack of personal freedom. And it's not just that, अभी शायद एक केस भी हुआ था about a Pakistani American girl, or maybe it was British, I don't know. She used to make TikToks. I think she was 14, and her dad took her to Pakistan and killed her because he did not like the fact that she made TikTok videos. It was an honor killing or whatever. जिसको भी ये frustration औरतों की समझ में नहीं आती ना, ये उसके लिए है. Let me explain to you why this matters so much. जब आप किसी को पर्सनल फ्रीडम देते हो ना, तो आप उसकी डिग्निटी एज अ फेलो ह्यूमन बीइंग, एज अ फेलो इंसान रिकग्नाइज कर रहे होते हो. आप इसको इस तरह सोचने की कोशिश करो कि जब कोई मुजरिम होता है और वो कोई क्राइम करता है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करता है, तो आप क्या लेते हो उससे? आप उसको जेल में डालते हो और उससे उसकी पर्सनल फ्रीडम लेते हो. उसके पास कपड़े होते हैं, उसके पास खाना होता है, उसके पास सोने की जगह होती है, उसके सर पे छत होती है, उसके पास लोग भी होते हैं बात करने के लिए. एंड इन सम अमेरिकन वेस्टर्न prisons they even have activities to do. They can play chess, they can watch TV, they can read books, they can get an education. उनकी रिस्ट्रिक्ट क्या की जाती है? Their personal freedom, their dignity as a human being, that is taken from us. And जब इस चीज़ पर सवाल उठाओ तो आगे से बोलने को आता है कि किस चीज़ के लिए ज़रूरत है तुम्हें फ्रीडम. व्हाट डू यू वांट फ्रीडम फॉर? डू यू वांट टू स्टडी? घर पे बैठ के पढ़ लो, किताबें पढ़ लो. डू यू वांट टू गो हैव फन विद फ्रेंड्स? फ्रेंड्स को घर पे बुला लो, घर पे उनके साथ मज़े कर लो, हमारे साथ चली जाओ. It's not about that. It's not about the safety aspect of it. It's about control. And it always has been about control. As women, we are born mujrim. We are born with some inherent sin. We are inherently undeserving of personal freedom in this society. Or think of it a little philosophically. खुदा ने जब इंसान को इख्तियार और फ्रीडम दी, खुदा ने जब इंसान को आज़ादी दी, खुदा को अंदाज़ा नहीं था कि क्या क्या ईवल्स या क्या क्या डेंजर्स हम फेस कर पाएंगे. God knew what evil humans were capable of. लेकिन खुदा के नज़दीक भी human freedom and free will was more important than the evil they might do. अगर खुदा ने मुझे ये इख्तियार दिया है, तो आप कौन होते हो मुझसे लेने वाले? Who are you? This is my God-given right, and Muslim men have taken it upon themselves to take away this freedom from women as an act from God. और मुझे नहीं पता कि whether it's guilt, कि आप लोगों को इतनी गिल्ट है अपने खुद के सिंस के बारे में, तो आपको लगता है कि सबसे बड़ा वर्च्यू है कि किसी और की फ्रीडम ले लो, एंड दिस इज़ हाउ यू डिसीव योरसेल्फ. बट ऐसा नहीं होता. एंड व्हाट हर्ट्स द मोस्ट इज़ व्हेन फेलो वुमेन play into this mindset and play into this framework. When these old hags, these old fucking women who are sitting here talking about नहीं औरतों को ऐसे ही रहना चाहिए, चुप करके बैठना चाहिए. Why? And I think they are not just lying to themselves, it's not just coping from their own lack of freedom. I think it's evil. Human freedom is the highest virtue, and it is something that cannot be compromised. Being weak or being dependent or being incapable of doing anything is not a virtue. ये कोई सवाब का काम नहीं है कि आप इतनी वीक हो कि आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है, कि आप कुछ कर नहीं सकती अपने लिए. ये कोई वर्च्यू की बात नहीं है. This is not something that we should be celebrating as a society, कि our women are so weak and dependable and dependent. This is not something that we should be celebrating, and this is not something that we should be holding to the highest virtue. We should have the freedom, the personal freedom to choose where to study, what to study, how far to study, whether or not to get married.
I'm not saying when to get married, whether or not to get married. This is a choice that we have, and we should be given that. But we're not. We are not. And I want to know why. और it's not even about, मुझे डर ज़्यादा इस चीज़ से लगता है कि इस चीज़ का जो रिएक्शन आएगा ना अब, वो आप लोग देखेगा. दिस इज़ अ प्रिडिक्शन. ये एक एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव से एक प्रिडिक्शन है. आप जितना सप्रेस करोगे ना अभी अपनी औरतों को, फिर जब वो आगे डाउन द लाइन जाकर फट के आएंगी ना, तो फिर आप अपने माशरे का हाल देखो. अभी जो वेस्ट में हो रहा है विद fourth wave feminism, with over sexualization of women's bodies, with the rampant, disgusting sexualization of everything and commodification of everything. आपको लगता है ये खुद ब खुद ही उठ गया? आपको लगता है ये चीज़ प्लांट की गई उधर? आपको लगता है ये चीज़ अपने आप ही उठ के आ गई जस्ट बिकॉज उनका मुआशरा ख़राब है? नहीं. वहाँ पर for the longest time, women did not have the right to vote. They did not have the right to own property. They did not have a right to an education. They did not have any personal freedom. और उससे पहले उनकी चर्च, जो भी वुमेन स्मार्ट होती थी उसको विच कहकर उसको मार देते थे, जला देते थे. So the women were punished for being smart essentially. So जब आप इतना suppress करते हो किसी चीज़ को, तो फिर उसके reaction में वो होता है जो आप अभी देख रहे हो. द मोर यू सप्रेस समथिंग, वो उतना ही फट के आएगा. और फिर जब वो आएगा फट के, तो फिर वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा. वो ना उन वुमेन के लिए अच्छा होगा फिर, और फिर ना वो उन मेन के लिए अच्छा होगा. इट्स गोइंग टू बी डिस्ट्रक्टिव टू द सोसाइटी एज अ होल. अभी जो वेस्ट में हो रहा है, ड्यू टू men suppressing women for so long and the church suppressing people for so long, उसके रिस्पॉन्स में अब हो क्या रहा है? जो मदरहुड की डिग्निटी है वो गिराई जा रही है. Mothers are not seen as respectable professions, right? They're not seen as something that feeds into capitalism. So they are not dignified. जितनी motherhood is becoming a commodity. Surrogacy का जो पूरा concept है कि आप किसी और के पेट में अपना बच्चा पाल लो और आपकी बॉडी आपके पास रहेगी. एक्ट्रेसेस डू दिस बिकॉज दे वांट टू रिमेन ब्यूटीफुल. ये जो इतना आप लोगों ने मदरहुड को डिग्निटी से गिरा दिया है, या फिर वहाँ पे वुमेन हु सेल देयर बॉडीज and feed into a misogynistic system by selling their bodies, and they call it empowerment. आप ये सब कुछ जो खराबियाँ देख रहे हो वो आपके मुआशरे में भी आनी है, वो आपके पास भी आएंगी, क्योंकि women are starting to work. Ultimately हम हैं capitalist society. Ultimately everybody wants their stomach fed. Everybody wants bread. At the end of the day, everybody is trying to survive. So even in Pakistan, women are starting to work, and more women are starting to come into the workforce. और जितनी independent women होती जाएंगी, जो inevitable है, आप उसको रोक नहीं सकते. लेकिन आप उसके साथ साथ जो उनके साथ सलूक कर रहे हो ना, उसका जो रिस्पॉन्स मिलेगा आपको 30, 40, 50 years down the line, it's going to kill your society. Until you honor, respect, and dignify women by giving them freedom, you are not going to prosper as a society. Your society will crumble. आप इसकी एग्जाम्पल देखो, ऐसे कंट्रीज जिन्होंने एक बहुत सही तौर तरीके से पर्सनल फ्रीडम दी है और उनकी सोसाइटी कोई क्रम्बल नहीं हुई है. आप नॉर्डिक सोसाइटीज़ को देखो, आप स्कैंडिनेवियन सोसाइटीज़ को देखो, वहाँ पे वुमेन हैव द एबिलिटी टू चूज़ एंड डू व्हाटएवर दे वांट. और फिर वहाँ पे यू सी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि जेंडर गैप्स बढ़ते हैं. सो स्कैंडिनेवियन या नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंदर फिर मोर वुमेन आर बिकमिंग डॉक्टर्स एंड नर्सेज, या फिर जो थोड़ी फीमेल सेंट्रिक प्रोफेशंस हैं, प्रोफेशंस दैट हैव मोर टू डू विद पीपल. और आप देखोगे कि जो मेन है वो इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग एंड ऑल ऑफ कंप्यूटर साइंस, उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं नेचुरली, बिकॉज किसी की पर्सनल फ्रीडम के ऊपर कोई हिंजेस नहीं है, किसी की पर्सनल फ्रीडम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. And they are happy, and they coexist happily. People are very happy over there, and women respect men over there, and men respect women over there, and both men and women respect children over there, and they have a very
very good, very pleasant society. They have a very high happiness index. आप फिनलैंड को देखें, their happiness index is the highest and their education is the best. इसका reason क्या है? Because everybody mutually respects each other, which is not existent here, which should be. Because if not, तो फिर उसके repercussions आप भुगतेंगे और भुगतें मेरी बला से.